compilation process of C programming. First, we write the source code by use of preprocessor directive. It expand the code by using assembler. It is gather this assembly code. First, it is pre-process. माने हमें जितना program लिखिवा, ये first processing करिवो, pre-processing करिवो, तापरे ताको compile करिकी assemble गोटे जगह ताको assemble करिवो, इकट्ठी करिवो, तापरे हमको जो operating system ने हमको value टा show करिवार अछि, तो सेठी से मतलब execute करी देखियो. So these are the compilation process of your C program. Now, preprocessor directive. The preprocessor directive give instruction to the compiler to pre-process the information before actual compilation start. Compilation start हवा पूर्वरु जहाँ सब prerequisite information दरकार से ताको process करियो. सेथि पय हमें से preprocessor directive टा को call करिया पय हमें use कोचे hash symbol, and only white space character may appear before the preprocessor directive on a line. Preprocessor directive are not statements, so they do not end with a semicolon. The code which is expanded by the preprocessor is passed to the compiler. The compiler convert this code into the assemble code, or we can say that C compiler convert the preprocessor code into the assembly code. Okay, the compiler is what? Now it converting your programming language into the machine language. Preprocessor directive give the instruction to the compiler to preprocessor directive information before the actual compilation start. All preprocessor directive give begin with hash, and only white space is required. Now check that assembler. Assembler is used the assembly code. It is converted to the object code by using assembler. The name of the object file is generated by the assembler is the same as the source file. आमे प्रोग्राम टा को जो नेम रे सेव करिवा हमर assembler name टा भी शेयर रहिबो. The assembler code is converted into the object code by using assembler. The name of the object file is generated by the assembler is the same as the source file. Source file जहाना रहितबो assembler name टा भी शेयर रहिबो. Suppose मोर source code रो ना हैला hello.c, मोर assembler रहिबो hello.obj. Linker is what? Mainly the program written in C use library function. These library function are compiled and object code of this library file are stored in the .lib extension. The main working of the linker is to combine the object code of the library file with the object code of our program. Sometimes the situation arises when our program refers to the function defined in other file. Then the linker plays very important role on this. माउथरे कहूची केमती linker टा काम करिवो ना mainly all the program written in C use library function. ସେମାନେ कौन करंती ना सब predefined function टा को use करंती. These library function are pre-compiled माने आगुरु माने compiled है कि रहिथांती. Pre-compiled माने already बना है कि जिनस थाए. जेमती कि आमे कौन करू ना फ्रीज रे आमे किछि जिनस बने कि फ्रीज रे रखि दउ त जेते बेले हमर रिक्वायरमेंट हुए आमे फ्रीज रु काढी कि ताको आमे यूज करिताउ. त सेमती एई लिंकर कौन करिवो ना ये सबु जक लाइब्रेरी फंक्शन को यूज करिवो. दोज आर द लाइब्रेरी फंक्शन आर प्री कंपाइल्ड and the object code of this library file is stored in the .lib file and with the extension. The main working of the linker is to combine the object code of the library file with the object code of our program. Sometimes the situation arises when our program refers to a function defined in other files. The linker play a very important role in this. 8 pointer से कहूची, the main working of the linker is to combine the object code of library file with the object code of our program.
sometimes the situation arises when our program refers to the function defined in other file, then the linker plays a important role on this. माने आमर प्रोग्राम रे जो फंक्शन टा दरकार होची से फंक्शन टा जदि अन्य कोनोसी फाइल डिफाइन करा जायछि से जगारु बा सेही सोर्स रु मो फंक्शन टा को कॉल करबा को हेले मोर लिंकर रे एठी काम पड़ी थाए. So it links the object code of this file to our program. Therefore, we conclude that the job of the linker is to link the object of our program with the object code of the library file and other file. The output of the linker is the executable file. The name of the executable file is same as source file, but differ only their extension. In DOS, the executable file is called as the .exe and Unix. The executable file can be named as a.out. For example, if we are using printf function in a program, the linker add the associated code in the output file. Linker कौन करिबा ये गोटे हमरो executable file को convert करिबा. माने आमे जेतेबेले प्रोग्राम टा लिखिबा से .c फाइल ले स्टोर हबो तापरे ऑटोमेटिक से कन्वर्ट हबो .obj फाइल आउ जो आउटपुट टा हमकु शो करूची दैट इज स्टोर इन द .exe फाइल. exe file is called as the executable file. If you take this exe file to anywhere, then your program is smoothly working. The exe file you can सर वॉइस ब्रेक होउची आउ कार प्रॉब्लम अछि वॉइस में मनीषा यस सर वॉइस ब्रेक ब्रेक होतला. अच्छा ठीक है एबे ठीक अछि. एबे ठीक अछि आपको सुनिए कोन कहले नो सर एबे भी ब्रेक नहीं सर ऑडिबल नहीं. ऑडिबल होनी वॉइस. हेलो हाँ सर एबे ऑडिबल है. ओके ओके सो लिंकर एक्चुअली मु कहूची जेमति कि हमें गोटे प्रोग्राम टा हमें जेतले सेव करिवा गोटे प्रोग्राम टा हमें जेतले रन करिवा सी प्रोग्रामिंग रे सेटा .c फाइल स्टोर हो तापर हमें जेतेबेले ताको कंपाइल करूचे सेटा गोटे असेंबलर फाइल बा .obj फाइल ले कन्वर्ट हो तापरे से कन्वर्ट हो कोन रे ना .exe फाइल ले कन्वर्ट हो. हमें ये .exe फाइल ताको नेकी सबु जगह रे जो ऑपरेटिंग सिस्टम रे चाहिबा हमें सेही ऑपरेटिंग सिस्टम रे हमें ताको रन करि परिबा. तो exe file is called as you can say it is a software. You can take this to anywhere your software is working. Clear? सर वॉइस ब्रेक होउची नेटवर्क डाउन अछि कोन करियो आउ कार प्रॉब्लम अछि जेमति अविनाश यस सर वॉइस क्रैक होस्टी. अच्छा ଗୋଟେ ମିନିଟ୍
Okay, see that it is a structure of how the C program is compiled. First, the C program is stored with the hello.c. By using a preprocessor, it convert to the hello.i. Then by using of compiler, it is converted to the assemble code like hello.s. Then from the assembler, it is converted to the hello.obj. Now it is converted to the hello.exe file. So it is the process of how the C programming is working. First, आमे C programming टाको स्टोर करिवा hello.c रे. तापर आमे सेटा जतबे प्री प्रोसेसर ताको प्री प्रोसेसिंग करिकी hello.i रे कन्वर्ट करिवो. Then it is converted to the assemble code, that is hello.s. Now it is converted to the hello.obj. So from obj file it is converted to the exe file. So firstly, the input file hello.c is passed to the preprocessor, and preprocessor convert the source code into the expanded source code. First कौन हुए, आमे जो प्रोग्राम टाको hello.c फाइल में स्टोर करले ताको से expanded कोड रे कन्वर्ट करला hello.i रे. The expanded, just a minute. Then the expanded source code is passed to the compiler, and the compiler convert this expanded source code into the assemble code. Okay, so when it is converted to the assemble code, it is stored in the hello.s. First our file ta store haba hello.c रे. Then our file ta convert haba preprocessor directive use करके hello.i. तापरे assemble code ta store haba hello.s. The assembly code is then sent to the assembler, which convert the assembly code into the object code. So after the creation of the object code, the linker create a executable file. The loader will then load the executable file for the execution. Now printf and scanf in C. The printf and scanf function are used for input and output in C language. Both functions are inbuilt library function. Printf basically it is used to display the data in a screen. मते जदि C programming रे किछि जिंस शो करिवार अछि तले मो printf यूज करिवे. scanf रे काम कोन हला ना से डाटा टा एक्सेप्ट करिवो यूजर थारो आ वेरिएबल ले स्टोर करिवो. It accept the value from the user and store in a variable. The printf function is used for output. Scanf function is used for input. माने यूजर जो वैल्यू दबो से वैल्यू को एक्सेप्ट करिकी वेरिएबल ले स्टोर करिवार काम हला scanf रो. बुझियला? Yes, sir. Yes, sir. So I will show one example of this printf and scanf.
Suppose it is the window when you are open the Visual Studio, it is open, file, new project. Then you can give any name. आमे किछि name दे परिबा. First example. As include stdio.h. Then we have to write a main method void main. Now suppose I want to display only a number. Now for defining a number, so here int is one data type, variable is a. Okay, then int is the data type. For storing the integer value, we are using int. A is a variable. We learn in the pseudocode. We are defining numeric num. Numeric is a data type. Num is a variable. So here, for storing the numeric value, we are defining int data type. Int then a. तापर मु कौन सी जिनस डिस्प्ले करबा को हेले टी printf यूज करली printf enter a number /n which is moving to the next line. प्रोग्राम रो कौन सी स्टेटमेंट एंड हवा पर हमें सेमीकोलन यूज करिवा. देन scanf खाली देखी था केमती होउची तापर मु बतेबी गोटे गोटे प्रोग्राम. आमे इंटीजर वैल्यू टा को एक्सेप्ट करी कि वेरिएबल ले स्टोर करिवा. ए जो ए टा हला मोर वेरिएबल यूजर किछि वैल्यू दला से वैल्यू टा को मु एक्सेप्ट करके वेरिएबल ले स्टोर करिया पई बट scanf यूज करली %d फॉर इंटीजर वैल्यू. आई डिफाइन %d. एटा होची %a. %a मींस इट इज स्टोर द एड्रेस एंड स्टोर इन ए वेरिएबल. Then the number is %d then a. এটা %d लिखा हो कौन सी इंटीजर वैल्यू बा न्यूमेरिक वैल्यू नबा को हेले हमें %d नबा एक्सेप्ट करिया पई %d यूज हला डिस्प्ले करिया पई printf रे हमें वैल्यू टा एक्सेप्ट कला पर हमें तला डिस्प्ले करिवा तो सेति पई भी हमें एठी %d यूज हला. एबे मु रन करछि देखा प्रोग्राम टा केमते होछि.
See that there is asking for you enter a number. Suppose I pass here 40. They showing you the number is 40. बुझेला? Yes, sir. Yes, sir. कार किसी डाउट अछि प्रोग्राम रे? Just a minute. You write this program. A program टा लिखी नहीं. लिखुछ प्रोग्राम टा. Yes, sir. सर आमे प्रोग्राम लिखि परिबनी. तमे लिखि परिबनी हेलो कहीं? सर. हाँ. सर हमन डिवाइस नहीं ना मोबाइल के आप नहीं. मोबाइल ले डायरेक्ट ब्राउजर ओपन करो लिखा एठी ऑनलाइन ब्राउजर से को ब्राउजर. गूगल क्रोम तमन नहीं. गूगल क्रोम रे ओपन करियो टाइप करियो चलियो सेटा हबो नले तुमे ओटीजी केबल गोटे नै आसीबो आ गोटे कीबोर्ड किनिया पड़ियो. ओटीजी केबल रे मोबाइल रे रखि दबो आ कीबोर्ड रे लगेला परे तमे टाइप करि परिबो जहा टाइप करिवो कीबोर्ड रे तमरा मोबाइल रे भी सेटा लिखि हबो. बुझियो छी मजा कहू छी. यस सर. गोटे ओटीजी केबल आने पड़िबो. ओटीजी केबल टा कनेक्ट करिके ता दरे तमरा यूएसबी टा कर दबो. एटा लिखि नियो प्रोग्राम टा. गोटे मिनिट एटा देखिलो.
Yes, sir. Yes, sir. Okay, so next I now comes to the variable. The variable is a memory location. It is used to store the data value. The value can be changed and it is reused many times. The variable is a memory location where you have to store a value and that value can changes throughout the program execution. ଯେମିତି କି ଆମେ କହିବା when you are book a ticket for cinema hall for the particular time, like for the 2 hours or for the 1 hours, the seat is booked for you. So after that movie time is over, then that seat is allotted to the other person. The variable is the memory location. It is used to store the data value and it can be changed and reused many times. Okay, just okay. So variable is a memory location where you have to store a value. That I am giving an example that you can say ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସିନେମା ହଲ୍ ଆମର ରହିଲା ଯେତେବେଳେ 3 to 5 ଆମର ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି ତ 3 to 5ରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆସିବେ ତାହେଲେ ତମକୁ ସେ ସିଟ୍ଟା କାଢ଼ିବାକୁ ମାନେ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 5ଟା ପରେ। ତ ଭ୍ୟାରିଏବଲଟା ହେଉଛି ସେମିତି ମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଚାଲୁଥିବ ଭ୍ୟାଲୁଟା ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଯଥା ମୋତେ 2ଟା ନମ୍ବର ଆଡ୍ କରିକି ରେଜଲ୍ଟଟା ଶୋ କରିବାର ଅଛି ତ ओके सो जो वेरिएबल जो मेमोरी लोकेशनटा अछि हमर तापर से कोन करिवो ना टोटल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रे धर गोटे आमे दीटा नंबर ऐड करिवा दीटा नंबर ऐड कला परे आमे सपोज 10 एंड 20 दबा से हमको 30 देखिबो आउ गोटे यूजर को जेतेबेले सेम प्रोग्राम दबा से मे बी 30 एंड 40 दबा से गोटे रिजल्ट देखिबो। So it is a memory location. It is used to store the data and value can be changed and it is reused many times. It is a way to represent the memory location through the symbol so that it can be easily identified. Rules for defining a variable. A variable can have alphabet, digit and underscore. Variable name can start with a alphabet and underscore only. It cannot start with a digit. No white space is allowed within the variable name. Variable name must not be reserved word or keyword, like it is not a int float. Okay, so when you define a variable, it must not be a keyword or reserved word. You cannot define as a public, you cannot define as a int, you can define as a float. Okay, the data type specify the এটা বুঝিলা ভ্যারিয়েবলটা কোন? Yes, sir. Yes, sir. So data type specify the type of data that a variable can store, such as a integer, floating, character, etc. So these are the different data type we are using: basic data type, derived data type, enumeration data type,
void data type. So these are the different data type we're using: basic, derived, enumeration, and void. In basic data type, we're using int, char, float, double. Derived data type, we're using array, pointer, structure, and union. Enumeration data type, we're using enum. Void data type, we're using void data type. So normally basic data type रे हमर कोन आसीबो int आसीबो char आसीबो float आसीबो और double आसीबो. Derived data type माने कोन हबो हमर data type टा एक्चुअली कोन यूज हुए ना हमें मेमोरी टा डिफाइन कर देले से मेमोरी रे हमें को टाइप रो वैल्यू रखिबा जेंते कि पानी बा लिक्विड आइटम हले हमें बॉटल यूज करूचे परिवा पत्र ई सब आनिया पे गोटे बैग यूज करूचे सेमती एटा होची बेसिक डाटा टाइप जोटा कि int char float double हमें यूज करूचे. डिराइव डाटा टाइप रे array pointer structure union यूज करूचे. एनुमरेशन डाटा टाइप रे enum यूज करिवा. void डाटा टाइप रे void यूज करा जिवो. तो व्हाट आर द बेसिक डाटा टाइप वी आर यूजिंग? In char we are using 1 byte. In signed char we are using 1 byte. On signed character we are using 1 byte. Short we are using 2 byte. देखो आ भितर जो सब डाटा टाइप सब डिफाइन करा होची ए डाटा टाइप हमें प्रोग्रामिंग रे यूज करा होची. तेनुटी देखो char int short int एई बेसिकली एगुडा सब हमर यूज होची. कैरेक्टर हमर यूज करा जो जोटा 1 byte. Short यूज करा होची 2 byte. int हैला 2 byte. Short int हैला 2 byte. long int हैला 4 byte. Float हैला 4 byte. Double हैला 8 byte. long हैला 10 byte. तो ये सब हमें डाटा टाइप सब यूज करिवा. The keywords in C, a keyword is a reserved word. You cannot use it the variable name, constant, etc. So there are only 32 reserved words are present like auto, double, int, struct, break, else, long, switch, case, enum, register. So these are the 32 reserved word is present. Reserved word means which is already defined in the C language. And this reserved word you cannot give as a variable name, constant name, so you cannot give it. Okay, so जेतेबेले आमे कोनोसी वेरिएबल नाटा दबा ए जो रिजर्व वर्ड भितर कोनोसी हबने एगुडा को हमर प्री डिफाइन कहि परिबा बा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिक्शनरी रे ए सब हमर यूज करा जायछि. सेति पई आमे सब बेले अवॉइड करिबा जेतेबेले आमे कोनोसी वेरिएबल ना दउचे किबा कोनोसी फंक्शन ना दउचे तो ए सब कीवर्ड्स हमर यूज करा जिवो नाही. So these are the basic rule that we have to follow. तो डेटा टाइप जेमते कि एठी देखो ए जो प्रोग्राम रे मो तरा वेरिएबल टा डिफाइन कली एटा हला ए गोटे हला वेरिएबल एठी int हला डेटा टाइप. सो int स्पेसिफाई मु ए रे जो वैल्यू स्टोर करबी सेटा हला न्यूमेरिक वैल्यू जेमती प्रोग्राम रे मु 40 पास करी तो 40 एठी स्टोर हला. बुझेला? बुझ पाइला? यस नहीं सर. सर. ओके साउथ sir. रे कोन कहलो? साउथ रे कोंदु. int टा हला डाटा टाइप ए टा हला वेरिएबल. int माने डाटा टाइप हला जोटा कि से शो कला जे ए रे मु न्यूमेरिक वैल्यू टा स्टोर करबी. बुझेला? यस सर. ओके ओके सो ए 48 टा बुझेलनी. हां सर ए रे वैल्यू कोन 48 बोले. ए रो वैल्यू मु एठी देली 40 एंटर ए नंबर 40 पास करली 40 टा स्टोर हला ए रे ताले मते शो कला द नंबर इज 40. बुझेला? यस सर. Okay, so in the next class I will go for other programming means how you have to accept the character value केमती accept करिवा float value केमती accept करिवा एबे देखिबा. बुझिला? Yes, sir.